एंड इसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे. आफ्टर एवरी स्टेप वी हैव टू डू टेस्टिंग कि आपको ईसीजी आ गई है कि नहीं आ गई, राइट? अगली ईसीजी मैं आपसे कराऊंगी. ओके, सो कैसे रीड करते हैं? जब मैं स्टूडेंट थी या मैं जब टीचर बनी, पहला स्टेप गाइज हमेशा ये है ईसीजी में, वी हैव टू कैलकुलेट द रेट. ठीक है, अब रेट कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत ही सिंपल फंडा है. आप देखो, दिस इज पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी. सो इस तरह से जैसे आपने लिख लिया अपनी ईसीजी में. सो आर 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 आर. सो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आपको स्ट्रिप मिली है, नाउ यू गाइज नो व्हाट डू वी कॉल दिस स्ट्रिप? वी कॉल इट अ 6 सेकंड स्ट्रिप. तो 6 सेकंड स्ट्रिप में गाइज आपने आर काउंट कर लेने हैं. सो मेरे साथ काउंट करोगे कितने आर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो जितने आपके पास आर्स होते हैं इन 6 सेकंड स्ट्रिप, आपने जितने भी आर्स हैं उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. ये फॉर्मूला है. सो हमारे पास यहां पे कितने आर्स हैं? 7. सो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मींस व्हाट इज पेशेंट्स हार्ट रेट? 70 बीट्स पर मिनट. पहले मुझे बताओ इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? राइट? Okay, somebody saying please use English. Okay, perfect. Thank you. I will use English here. So now what I'm saying is, if you look at the 6 second strip, what you need to do is you need to calculate hours. So in the 6 second strip, how many hours we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And whatever number of hours you have, you need to multiply by 10. That will give you the heart rate of the patient. So you have 7 hours multiplied by 10 means what's the patient's heart rate? 70 beats per minute. Means patient is like, and you guys know what's a normal heart rate? 60 to 100 beats per minute in adults. I'm only talking about adults in today's class. Second step, and again guys, these are the steps which are universal. You have to use these steps in every ECG. This will make your life easy. So second step, as a nurse, what we do is we look for rhythm. Rhythm means regular or irregular, right? So now if you guys look at, if you think about the patient's pulse, when you check patient's pulse, for example, you're checking my radial pulse here. So you will see the heart is beating like dug dug. Ab hasna nahi mere upar, okay? Don't laugh at me. Dug dug, dug dug, dug dug, dug dug, right? This is the rhythm, right? S1, S2, S1, S2, right? So this means patient has a regular rhythm.